Namaskar and very good evening to all in the series of Education for Life. Today's discussion is on leading the change, youth and future of sustainable energy. The eminent guest for today's topic is a person who's a reference in the field of solar energy, Professor Chetan Singh Solanki. He's a professor at IIT Bombay, founder Energy Swaraj Foundation, and brand ambassador Solar Energy Madhya Pradesh State. Welcome, Professor Solanki. Thank you. Thank you so much. The sun has been worshipped as a life giver to our planet since ancient times. The way we have explored and exploited natural resources for our need as well as greed. In the coming years, I'm sure the future generation would not be able to avail the benefits of nature in the same way the way we have been availing. So it is necessary for each and every individual to do their bit for energy efficiency and renewable energy for sustainable future. India is endowed with vast solar energy potential. There has been a visible impact of solar energy in Indian energy scenario in last few years. Professor Solanki, in the present time, especially when we are hosting G20 summit, how relevant it is to say leading the change in the context of solar energy or sustainable energy rather? Well, first of all, thank you very much for having me here in this program, Education for Life. And I think this time is even more such education required, because the way climate is changing, it is going to affect everyone's life, and everyone on this planet, is going to face the consequences of climate change. So it is very, very high time that every individual on this planet gets education for life in the form of climate change and what is climate change, why it is happening. And therefore, the leading the change is very, very kind of apt right now, both from individual perspective and the country's perspective. The change is happening, and unfortunately, the change is not happening in the right direction, the climate change. It is going to affect everyone. We have seen, I'm right now parked in Mumbai. My yatra is in Mumbai, and yesterday it was, in the night it was raining, in the morning it was almost like a monsoon season. I could feel that, so that is a very, very fast change, the way climate is changing, and our adoption of climate change and the solutions is not as fast. And therefore the change is accelerating. So the change is imminent. We need to be prepared for it. And right now, the country is doing something in the form of promoting solar energy. G20 presidency is a great example where we are talking about one world, one family. But still, I believe the change or the context of change has to be much more precise and much more in-depth. As I said, because climate change is happening very, very fast, and we are not gearing up or changing ourselves as fast as we should be. And I wish that all our listeners understand this aspect, that much, much, much more is required as a part of the solution. So you have already, set an alarm that time is less. So how fast we are running out of time for these to adopt corrective actions? Well, I mean, there can be a very simple and short answer to that. And if I give that answer to your audience, it will be really, really shocking. But I don't know if you throw this question to everybody who's listening, what is your estimate? How much time is left? By the way, the first alarm that we have is 1.5 degrees centigrade of global warming. That is a kind of a tipping point after which the change in climate will start to become irreversible. And I typically ask people, what do you think? How much time is left? Do we have 500 years? Do we have 100 years? Do we have 50 years? Do we have 40 years, 30 years, 20 years, 10 years? Answer is no. We do not have even 10 years of this thing. And how much time is left is given by what is called climate clock. And I want to show it. I hope you'll be able to see. Yes. It says 6 years and 127 days, 4 hours and some 19 minutes and 42 seconds. That is the time left
6 hours and 123 days only. That is the kind of time we are talking about. You can actually look at this climate clock on your Google. So 99% people on this planet have no idea that we are running such a short time, and 99% people are living in a business as usual way, not really being alarmed by the amount of time left, not being alarmed with the kind of action that we require, and particularly the young generation has to be worried about it. Punija, I keep telling, you and I, those who are in 40s and 50s and 60s, they will spend another 20, 30 years, 40 years, and they will go somewhere, right, from this planet. The people who are young, and they are the one who are going to stay back for a longer period of time, and they are the one who are going to suffer most. And that's why this education for life, as I said in the beginning, is very, very important. And this education, I believe right now, the most important one is about the climate change and the severity of the climate change and how to correct the climate change. Rightly said, Professor. The first step is to get educated. Each and everyone needs to be educated so that they have a sense of responsibility towards this alarming situation. Rightly said that hardly 6 years and a few more days are left for that. So in current scenario, I have observed that youth is increasingly engaging in the activities related to climate change and energy transition issues, maybe adopting some postgraduate programs or undergraduate programs, or even activities at a school level as well. So what other steps are needed apart from educating them through formal or informal way? Well, I mean, more than a formal way, I believe that there is a need of education in informal way. Because it's not that only educated or educated in a particular field, let's say sustainability, is only having a role to play. But as I said, every individual, whether it's American or African or Indian, every individual, whether rich or poor, every individual, whether old or young, we are all consuming energy. And 85% of this energy in the world comes from coal, oil, and gas, which is carbon source. And when we use these energy sources, when we burn, let's say LPG in our kitchen, when we burn petrol and diesel in our vehicles, when we burn coal in power plant to generate electricity, we are all responsible for emitting carbon dioxide. So everyone, rich or poor, young or old, everybody is emitting carbon dioxide by means of using energy and material. When you and I wear clothes, we are emitting carbon dioxide. It has taken some energy. When we brush our teeth, it has taken energy to make toothpaste, toothbrush, water, pipe, wash machine, mirror, motor, overhead tanks, all that takes energy. So brushing your teeth itself is carbon emission. So everybody is emitting carbon dioxide, and therefore everybody has to be sensitive to the use of energy and material. That is the first education, that we all use energy, we are all emitting carbon dioxide, and we are all responsible for climate change. Everybody is responsible for climate change. So that is the first step of education that youth particularly has to understand. Now, second problem is that once the carbon is emitted in the atmosphere, it remains there for 300 years. Average life of carbon dioxide is 300 years. And this carbon dioxide, which is there in the atmosphere, it is called greenhouse gas, right? So it is going to do something. What it is going to do? It is going to have greenhouse effect. What is greenhouse effect? Trapping of the heat, heating the planet, that's a greenhouse effect. So whatever energy that we are consuming today, it is going to result in a carbon emission that will be there in the atmosphere for 300 years, going to contribute to the climate change. That deserves even much more attention to the use of energy and material. That informal education has to be there everywhere. One thing, the last thing is, then how to prevent it, how to solve the problem? Well, I mean, we normally say prevention is better than cure, right? So switching to alternate energy form like solar energy, wind energy is not a solution. It is a solution, but not the best of the solution. Why? Because generating and fulfilling your energy with solar energy is like a prevention only. It's like a cure only, right? But prevention is when you do not use energy. That is where I think intelligence is required. That is where the patience is required.
That is where Indian knowledge system is required, that how we in India used to worship our rivers, our forests, our trees, everything. How it is important not to disturb them, destroy them, because if you're going to disturb and destroy them, you will get disturbed and destroyed. So that understanding is required. How I will use less and less energy and use that less energy from renewable energy, then only actually we can prevent catastrophic climate change. This understanding is actually required, and this has to be part of everyday's life. You can't be happy saying, on World Environment Day, I have done this and planted one tree. We are committing the crime literally every day. We are all emitting carbon dioxide every second of our life. And we only once in a year on World Environment Day, we do something to correct it. That is not going to work. If you are emitting carbon dioxide every second you have to think how I will not emit, or how I will absorb it, or how I will find an alternative solution. That education is also very important, and more so for the youth, because as I said, they are the one who are going to stay longer on this planet. They are the one who are going to face greater consequences of the climate change. Thank you, Professor, for this valuable input. Less is more in life. So far we are of opinion that you need more to become big, or you need more to become more. So it is less is more in life. If you create that consciousness in your mind that whatever gadgets I am using, whatever activities I am executing, right from morning till sleep, or even after the sleep, I need to be very choosy, very selective, very precise regarding my needs, first of all. I think, am I right, Professor? Absolutely. And I would like to bring one quote here, and I think the youngsters will like, and particularly when you say less is more, why less is more? Because, there was a British economist called E.F. Schumacher, and he has written a book called Small is Beautiful. The title of the book is Small is Beautiful. Okay. What he has written, one very, very powerful quote in this book, what he said? He said, any intelligent fool, listen it carefully, any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. Any intelligent fool can do things bigger, more complex, and more violent. It takes touch of a genius to make things simpler and smaller. Beautiful. It's a genius to make things simpler and smaller. That is much more powerful. That is much more fulfilling. And I think that is why I would like to challenge all the youths. How can you simplify your life and be more fulfilling, and so that you are contributing less to the climate change and you are enjoying and leading a very satisfactory life? That is, I think, the balance we have lost, and the only thing that growth means money growth, right? Even if your health goes down, even if your water goes down, even if your atmosphere degrades, even climate change happens, nothing matters, only money matters. I think that is where the big, problem we have committed. Yes, that's where in this book, subtitle of this book is even more beautiful. Small is Beautiful. The subtitle is Study of Economics as if People Matter. As if people matter. Unfortunately, in today's economic model, only profit matters. Youth has to understand this, that look, guys, it is life in a broader sense is more important rather than just creating money and making a bank balance and bigger house and bigger cars. And I have seen, those who are all having all this, not necessarily are most happy people in this world. And in fact, there is a more depression, the most suffering. So youth has to really understand that life has many more dimensions than only economic dimension. That's very important learning we should pass on to our young generation. Since you have touched a very vital aspect of this particular topic, that is about life. So the basic principles of living have been changed in last 50s, post-independence rather, I would like to say, that we have adopted practices of Western, just to show off, forgetting our Indian value system. Since I'm in Jaipur right now, and I hail from Rajasthan, there is a common saying that जब भी बाहर जाता हूँ, so in connection to energy, thought process related to energy conservation, वो ये कहते हैं कि हम लोग जो है जंगल में सूखी लकड़ी जो है जो गिर गई पेड़ से, उसे उठा के लेके आते हैं, उसे चूल्हे में जलाते हैं, और जितनी यूज कंज्यूम हो गई उसके बाद पानी डाल के उसे ठंडा कर देते हैं. उसका कोयला जो बन गया, उस कोयले को फिर यूज करते हैं, और फिर उसकी कोयले की जो राख बनी, उस राख से बर्तन मांजते हैं,
और बर्तन मांजने के बाद राख में जो भी रेजिड्यू खाने का मिक्स हो गया, उसे किसी गड्ढे को भरने के इस्तेमाल में हम लेते हैं. So that kind of social dynamics, social concern और habit inculcation of habits are needed. Social dynamics पे मैं चाहूंगा कि हम किस तरह से, क्योंकि बड़ी बातें बड़े लोगों को करने दें, लेकिन जो रोजमर्रा की बातें हैं जिनसे अल्टीमेटली जिंदगी चलती है और जो बड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज द वे वी लिव. सो जस्ट अगर आपके पास कोई टेम्पलेट है कि जिसमें हम एक, चाहे आप महानगर में हो, चाहे छोटे शहर में हो, गांव में हो, किस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स हमारे जो हैं, they can contribute to, in a bigger manner, to conserve energy, or to develop a thought process of a judiciousness towards energy saving. Absolutely. I mean, what I have done is just as a guiding principle to everyone, in the modern world, which is so much technologically driven, when where there's a climate change is also a problem. What is the fundamental guidelines? And I have written 2 laws of living on this planet, and I call them Solanki's laws of human existence. If humanity want to survive, we must follow this law, and they're very simple, very basic. They're actually laws of nature. What are these laws? Number 1, in an ecosystem of finite resources, there has to be finite consumption, right? And our planet is a finite ecosystem. There is a size of the planet is finite, water is finite, minerals are finite, everything is finite. Therefore, our consumption has to be finite. Simple. No matter how big the population will be, you can never stretch your planet and make it bigger. No matter how advanced your science is, you can never create soil on this planet. You can never create more minerals on the planet. So let us limit our consumption, because in nature, everything is limited. What you should limit the consumption of? Everything that you consume: water, food, clothes, furniture, cement, roads, every material you have to limit, because that's only one fundamental boundary condition. So everybody should think, how can I limit? Can I live with the less water? Can I live with the less clothes? Can I use less energy? Can I make a smaller house? Can I have a smaller vehicle? Can I use a small? This is what is the rule number 1. And it's a fundamental to existence. What does it mean? If modern human doesn't follow this, they will not survive on this planet. My guarantee. Second, rule number 2, in an ecosystem of finite resources, there has to be distributed production. Why? Because whenever we make a centralized production, it always results in unequal distribution, right? More centralized production, only unequal distribution. Unequal distribution means inequity in the world. Inequity means asamanta, ashanti, lack of peace, violence. And that's what is happening last 30, 40 years. Science is growing, technology is growing, economy is growing. Is the brotherhood also growing? No. Is the love between people growing? No. Is the violence growing? Yes. Because we are following wrong economic. So decentralize. What does it mean? Make it local. If you are using water, first of all, do not waste water. Recharge water locally. If you are wearing clothes, do not fill all your cupboards full of clothes. Use less number of clothes and use a local cloth. If you are using food, do not waste and use a local food as much as possible. And if you are using energy, which is the most fundamental and most dangerous thing that we use, if you are using energy, rule number 1 is limit your consumption. Rule number 2 is localize your production. Produce it locally as much as possible. I think this 2 boundary condition of limiting consumption and localizing production, you can apply to anywhere and anytime, in any country, whichever country you are in. Limit your consumption, localize your production. I think whenever anybody who's consuming something, he should pause for a second and see, can I avoid it? Can I limit it? And can I get the local one? I think these are the fundamental guidelines. Now use the guideline and do anything that you want. And then apply it. And then you yourself will see whether I should do it or I should not do it. I think those 2 fundamental things, limiting and localizing, L and L. This is what people should remember in consuming anything in this world. Not only that will reduce your financial burden to earn more and consume more, it will also make you peaceful. It will also reduce the environmental damage, and it will make you sustainable in real sense. So the issue is not merely confined to external factors. It is connected to your internal peace, joy, and happiness as well. Absolutely. Absolutely. So in any case, thank you for these 2 basic and fundamental principles: finite consumption and distributed production.
if we inculcate in our mindset, in our operating system, so by default, you have learned A plus B whole square. So whatever value you fit in, you will get the appropriate answer for that matter. So coming to for last 10 years or so, we have emphasized a lot in terms of skill education, and lastly, NEP has endorsed a lot when it comes to skill education or hands-on practices. So when it comes to energy, green skills is the area. So if you can throw more and more light on green skills for employability or startups, or in whatever sense they can empower themselves to enhance their green skills. Well, I think energy is very important, right? Energy drives everything, our social growth and economic growth, and energy has every second of our life, we use energy. And the current source of energy, the coal, oil, and gas, is a problem. So we need alternative energy sources, and we need energy from solar, wind, biomass, whatever it is. And we need huge amount of energy. And therefore, it is very much the need of the hour that we switch to green energy and sustainable energy technology, but in the manner it is local, right? When we localize something, we need by nature more number of people. And therefore, it is very clear that if you want to secure our future, we need to switch to solar energy or renewable energy in a manner that is decentralized and localized. We need a lot of people, a lot of skill development is required. And these skills need not to be a graduation degree, for example, or post-graduation degree. This can be a small skill. For example, a young entrepreneur can learn how to install solar systems for the households. And there are 25 crore households in our country, and every household is a potential user of energy, and potentially he can switch or she can switch to solar energy. So getting that hands-on skill to install itself requires a little skill development, but it can be a good business opportunity. Somebody can be a designer of solar systems, somebody can make solar products, some other people can do the research in the solar. So I think there is a great scope for renewable energy because we need to switch to solar or renewable energy as soon as possible. We cannot continue to base our life on carbon-based energy, which has many, many problems, including non-availability, right? Now, look how the world is, become fragile, that there are some energy sources in, Saudi Arabia and Russia and Australia. Everybody depends on them. And if there's a war in Russia, what happens? Everybody gets affected. Your and my vegetable prices gets affected. That is what I call fragility of this world. We have designed a very fragile world. If something happens in America, so, my life changes here in India, which is exactly opposite. So I think becoming energy independent or Atmanirbhar with the help of local people, with the local skill, with the help of local resources is the most powerful thing in today's world. And that is what I called it as an energy Swaraj, adoption of energy independence, becoming energy Atmanirbhar with the local people, with the local resources is one of the most powerful tool. And in this scheme of energy Swaraj, everybody needing energy Swaraj, adoption of energy Swaraj, we need a lot of young people to take lead, become skillful in designing system, installation system, maintenance of solar system, and make our life sustainable. So it's a social contribution, it's environmental contribution, but it is also an opportunity to take it as a business and as a livelihood opportunity. Right. So you have mentioned about social innovations, categorically. So in what way we can initiate social innovations at local level, especially rural areas, let us say. Your take on that, the role of youth to instigate social innovations at local level. Well, as I said, the fundamental cause of all the problem I see, everything that I see in the world, it has one problem, has one cause only, that is use of carbon-based energy. So kind of violence, unemployment, centralization, natural degradation of air, water, everything has a root cause in terms of availability of energy or centralized, concentrated form of energy in the form of coal, oil, and gas. So we need to get away from that as soon as possible. It is very clear, otherwise climate change will affect everybody's life in a very negative way. So when I need to get away, how do I do this? How do I create an efficient product? How do I collaborate with the one house to the neighbor house so that we can share our energy, right? We share other things.
How can I create a small packets of solution, like you go and buy 5 kilos of sugar. Can I just go and buy in the market, and a 1 kilowatt of panel, just like that, and just put it on my own? Can I buy solar products right and left? So a lot of innovations required in terms of the solution, in terms of the implementation of solution, in terms of collaborating between the villages, between the household. So less of a technological innovation. I think all solutions are basically social innovation. How do I bring people on board? How do I sell that there is a climate change and I need to switch to solar energy? So a lot of that social innovation is required, social engineering is required, innovative ideas are required to promote the adoption of solar energy and renewable energy. So scope is great, enormous. It is just a beginning, but the time is less. Time left is very less, and therefore we need to accelerate the innovation, social innovation, not technology. There's enough of technology available. Social innovation, entrepreneurship, and reach out to people as soon as possible towards adoption of 100% solar powered life. Thank you, Professor. Now coming to Swaraj. Now it is not Swaraj, I mean, getting rid of British colonial rule. It is energy Swaraj. And we have ample resources, ample reasons to get into energy Swaraj. Take your time to elaborate your mission, energy Swaraj. Well, I think it's very simple that it's all the problems in the world, as I said, is created because of energy. And energy Atmanirbharta will actually give us a real independence. Because right now, almost 12 lakh crore rupees are spent by India to import energy. We import 20 to 30% of coal that we use. We import 60% of the gas that we use. We import 80 to 85% of crude oil that we use. And as happened to any other country, like, recently in recent past, Sri Lanka, ran short of foreign exchange, could not get the energy supply, and all the entire food chain supply was disturbed. Pakistan is running, short of foreign exchange and is having disturbed energy supply. So energy independence is a very, very powerful tool. And but how do I achieve energy independence? By means of the two rules, limiting consumption and localizing production. And if we do that, then only we can achieve energy Swaraj at the local level. So Atmanirbhar Bharat is only possible when we are Atmanirbhar in energy, and we can be Atmanirbhar in energy when every individual starts to move towards energy independence. In Hindi we say, हम सुधरे तो जग सुधरेगा. हमने एनर्जी इंडिपेंडेंस लाया तो देश को एनर्जी इंडिपेंडेंस आएगा, देश का फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, कार्बन एमिशन बचेगा, लोकल जॉब्स विल बी क्रिएटेड, लोकल इंडिपेंडेंस होगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, विमेन एम्पावरमेंट होगा, क्लाइमेट चेंज को भी सॉल्व कर सकते हैं. सो in my view, energy Swaraj means energy by local for local is one of the most powerful idea of the modern times that every individual, every institution, every country needs to adopt. Whether it's America, or Africa, or India, everybody has to become energy independent for the sustainability of life and for making life more peaceful and more joyful. Otherwise, you see there is a lot of stress, geopolitical stress in the world because of the energy. So energy Swaraj is a very, very powerful idea, and everybody has to adopt it, whether Indian or American or African. So with the motive of energy Swaraj, you started energy Swaraj Yatra, a journey of 10 years. You have taken leave for 10 years from your institution, IIT Mumbai, and you are traveling for last 3 years. I think it started prior to COVID. Yeah, I started this in 2020, and this is 11 years Yatra. This Yatra will continue for 2030, and I have pledged that I will not go home for 11 years. So last time when I was at my home, it was 2020. Next time when I will go home, it will be 2031. So 11 years, this place where I'm sitting right now, my bus, Yatra bus, is my home. And I sleep here, I eat here, I work here. So this is my home, and it is a mobile home, so I can take it anywhere. Everybody who's listening to me are also most welcome to visit Energy Swaraj Yatra bus. So right now, this session is live from your Energy Swaraj bus.
Yes. So how come this idea came in your mind to have such a, your own mobile bus and, meeting people, communicating with them? Well, I think What the is the problem, objective? yeah, the problem of climate change is so huge. It is not a problem of one state or one country. It is a problem of every human being on this planet, isn't it? Every human being. And therefore, I thought if Gandhiji would have been here on this planet, what he would have done to solve such a problem. The first thing that came to my mind is he would have started some, Padyatra or some fasting or something, he would have done it. Uh, I thought that, if you want to bring people on board, we need to also do some yatra. But the problem is so big that it cannot be solved by 1 or 2 years of yatra. And therefore, I thought there has to be sufficiently long time spent on this. And I decided for 2030, because 2030 is also Sustainable Development Goal target. So my yatra is completely aligned with that. And what I'm trying to achieve through yatra is the same goals that as per the SDGs. And that's why it was 11 years decided. Also, I felt that this big change cannot be brought in part and parcel. You can't take a break from yatra during Saturday, Sunday, and Holi, Diwali, and all. So I thought, no, I need to think every single day, 365 days in a year, all 11 years, only about one thing: how to solve this problem of climate change, how to bring people on board. And that's why I have pledged not to go home for 11 years. So this is how the idea evolved. And when you are going to be out for 11 years, of course, where are you going to eat? Where are you going to sleep? Every day sleeping in a different place will be not good for the health. And that's why this idea of the bus came, that, can we design a bus where we can sleep and eat and work and everything? And that's how this has been designed. It's a solar powered. So there are solar panels on the top, and it generates enough electricity to fulfill all daily requirements. So I can. Yes, please. This is my. We have a look. This is my bed. I hope you can see. Yes, please. This is my library. Great. My workplace where I'm sitting right now. Behind you see there is another library. There is a temple. Below the temple there is a small garden, and there is a kitchen there. That place that you see is a kitchen. Behind me there is a washroom. There's a training room. We also provide training, and every space is used multiple times and multi-purpose. So training room gets converted into dining room. Then it also gets converted into bedroom for other people and other guests. So every space in the bus is used in multiple ways. So less is more in life is we have already witnessed. So you have a workstation, kitchen, garden, bed, meeting room, seminar room, as Everything. well as all with the help of solar energy. Yes. Yes. So consumption of fuel is only for the purpose of commutation? Yes, the diesel is used only for the traveling. Otherwise, all our energy needs are fulfilled with the help of only solar energy. And what about water, other essential resource? Well, I mean, whenever we need to fill water, wherever we get parked, we kind of take it from the local place. There are two tanks: freshwater tank and wastewater tank. Tank capacity is about 450 liters, so that's good enough for about 3 days. Okay. And what about the waste management? Are you adapting? There is a waste tank. It's a bio toilet, and also there is a shower and kitchen wastewater. So we empty this tank in a couple of days if there is a sewage water system there, or when we are traveling between the cities, then sometime on the roadside also kind of we discard that. Great. And how much time it took to design the bus? Well, I mean, it's really not much time. Once the idea was clear that we need to have bus, then I started designing by putting where should the bed be. That has to be the most comfortable place. Where should I be sitting? Where the kitchen should be. So bed is at the forefront, which is really the most comfortable place. And then my sitting place, the bed and all this becomes a meeting area also. The table is designed in such that it becomes a board also, so I can take classes from here. Kitchen is behind that, so you don't have to use it all the time.
and at the backside training room, which we need not to use it during the travel. So that's why it is kept at the back. There is also door at the back, so people can enter from the back and directly get out, so they don't have to come to this place. And special gadgets for internet connectivity? Mobile network has been really great in the country, and then we have some dongles, so multiple networks are there. I have literally not faced any problem, much of a problem while traveling. So thanks to whatever the growth in the communication technology, that has really helped me to travel and without affecting the work. India is changing. प्रोफेसर, आपने बहुत सारे लोगों के साथ में इंटरेक्शन किया है पिछले 3 वर्षों में, चाहे वो गांवों के लोग हो, पॉलिसी मेकर्स हो, नीति आयोग हो, दिल्ली हो, AICTE हो, हर व्यक्ति ने आपसे जुड़ने की, अपने तरीके से जुड़ने की कोशिश की है. कमिंग टू ग्रास रूट लेवल, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ब्रेकिंग द आइस इज द बिगेस्ट चैलेंज. We may come up with very good policy document on paper, policies, execution, trainings, manpower for everything. But ultimately what matters is execution. और वो possible हो सकता है local लोगों के mindset से, उनकी receptance से. So your personal experiences for this transition during this journey. Well, I mean, I have been, I would say that when we explain to people that, look, there is a problem, and what is the cause of the problem, and you are honest in approach, you are convinced completely that there is a problem, I think people understand, and I read Gita and Ashtavakra Gita, and what it says is that when you really speak from your heart, it's not only that your mouth is speaking, your existence will speak, your whole body speaks, your eyes will speak, your body will speak. So आई थिंक वो शिद्दत से किसी काम को करते हैं तो पूरी कायनात में लग जाती है. तो मेरे ख्याल से रिस्पांस हैज बीन वेरी पॉजिटिव, एंड ब्रेकिंग द आइस हैज नॉट बीन दैट डिफिकल्ट, बिकॉज ये सच में प्रॉब्लम है, सब लोग उसको अनुभव कर सकते हैं, अपने दिनचर्या में फील कर सकते हैं. ये अलग बात है कि कोई उनको बताने वाला नहीं, किसी ने इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, किसी ने इतना उसमें एनर्जी नहीं लगाया कि वो लोगों को बता सके. वही प्रॉब्लम है दुनिया की, कि हमारे जो 5 P's है, मैं बोलता हूँ, वो गड़बड़ है, मतलब वो फेल हो गए इसमें. हमारे पेरेंट्स फेल हो गए कि क्लाइमेट के प्रति जो अवेयरनेस आना चाहिए, जो हमारे पहले जो मेरे फादर होते तो वो तो ऑलरेडी इतना रिस्पेक्ट करते, पर हमारे पेरेंट्स ने शायद नहीं किया, या मैं एज ए पेरेंट नहीं कर पाता. दूसरे हमारे प्रोफेसर्स या टीचर्स ऑल्सो फेल हो गए, क्योंकि वो प्रोफेसर्स ने भी वो सेंसिटिविटी नहीं लेके आए, या क्लाइमेट चेंज इतनी सीरियस प्रॉब्लम वो नहीं लेके आए. तीसरा पी है वो प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रोफेशनली काम करते हैं, कारपोरेट्स में काम करते हैं, अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या इंश्योरेंस हो. ये सारे सेक्टर वो भी फेल हो गए, क्योंकि हमने सिर्फ इकोनॉमी पे, ग्रोथ पे जोर दिया है. चौथा, पॉलिसी मेकर्स भी फेल हो गए, क्योंकि जो पॉलिसीज बनी हैं उसके कारण एक्चुअली नेचर को तो नुकसान ही हुआ है, और नेचर को नुकसान हुआ है मतलब हर व्यक्ति को नुकसान हुआ है, बिकॉज हर व्यक्ति तो इस धरती पे जीता है, श्वास लेता है, पानी पीता है. यदि नेचर ही डिग्रेड हो गया है तो फिर सबको नुकसान हुआ है. तो पॉलिसी मेकर्स हैव आल्सो नॉट डन प्रॉपर. एंड फाइनली द फाइनल पी इज पॉलिटिशियंस. पॉलिटिशियन ने भी वो एस्पिरेशन नहीं जगाए हैं कि आत्मनिर्भरता या क्लीन एनवायरनमेंट हैज टू बी द ग्रेट एस्पेक्ट एंड एस्पिरेशन. मैं शुद्ध श्वास ले सकूं, शुद्ध पानी पी सकूं, शुद्ध खाना खा सकूं, ये बहुत बड़ी बात होना चाहिए हमारे जीवन में, जो कि नेचुरल था, नॉर्मल था. अभी हमारे लिए उसके लिए स्पेशल एफर्ट डालना पड़ता है, ऑर्गेनिक लाने के लिए मेहनत करना पड़ती है. घर में शुद्ध श्वास लेना है तो एयर प्यूरिफायर लगाना पड़ता है, वाटर फिल्टर लगाना पड़ता है. तो जो सबसे सामान्य काम है जीवन में, जरूरी था जीने के लिए, हवा पानी मिट्टी, उसको हमने इतना कठिन बना लिया. एक मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में कि एक मेरे ख्याल से इंडोनेशिया के किसी पर्सन का स्टोरी था. वो किसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला था, एंड वो अपनी कहानी बता रहा था कि कैसे वो गांव से आया, शहर में रहने लगा, फिर वो झुग्गी में रहने लगा, उसके लिए कितनी मेहनत लगी. तो उसने बोला, एक दिन पहले मैं सोच रहा था कैसे, मतलब ये जो आधुनिक इंसान इतना एडवांस है, साइंस टेक्नोलॉजी ये सब कुछ है, ही सेड कि चिड़िया को अपना घोंसला बनाने के लिए 1 दिन लगता है, 2 दिन 3 दिन लगता है, चूहे को अपना बिल बनाने के लिए
2-3 दिन लगते हैं। ये आधुनिक मनुष्यों को अपना घर बनाने के लिए 25 साल क्यों लगते हैं? 25 साल तक ईएमआई क्यों चुकाता है? तो ये जो गड़बड़ है कि जो सबसे बेसिक मेरी जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, उसको इतना कठिन कैसे हो गया? तो ये जो पेरेंट्स, पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियंस, मेरे ख्याल से हम सब फेल हो गए इस बेसिक चीज को समझने में कि नहीं, जीवन का आधार हवा पानी मिट्टी, उसको ठीक करके ही बाकी काम करना है। उसको बिगाड़ के बाकी काम किया तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम हो गया। ये बड़ा मूर्खता वाला काम हो गया। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चूक हुई है आधुनिक इंसानों से, बहुत बड़ी चूक हुई, और इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको और हमें तो कम करना पड़ेगा, पर जो I think signal is getting interrupted. Mr. Solanki, we are unable to hear you. अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। Sorry, last का कुछ 30 seconds का we missed it out. If you could you please repeat that? अच्छा, आपने कहा था मेरे यहाँ से अभी सिग्नल ठीक है? हाँ, अभी बेटर है। यस। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इसका जो खामियाजा जो हमसे चूक हुई है, इस सबको उठाना पड़ेगा, खास करके यंग जनरेशन को, जिसको धरती पे 50, 60, 70 साल और जीना है। जी जी। मैं एक प्रश्न बीच में रह गया था जब आप बस का दर्शन करा रहे थे हमें। आपकी खुद का जो दिनचर्या है वो क्या रहती है? क्योंकि आगे से आगे आपके प्लानिंग्स होती हैं, ट्रैवल भी करना है, खुद को मैनेज भी करना है, और चेंजेस इतने डायनेमिक हैं। कभी बरसात आपको फेस करनी पड़ रही है, कभी मतलब मैं शीट मेटल की एक बस है, और ठंड के समय में, कड़कड़ाती ठंड के समय में सोने का कितना कठिन अनुभव रहा होगा। आपके जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं रिलेटेड टू जर्नी और योर डे टू डे रूटीन क्या रहता है? पहले हाँ, ये तो बहुत चेंज आता है और परेशानी भी होती है। जैसे कल जब मैं सोया था बस में, तो नॉर्मली खिड़की खुली करके सोते हैं क्योंकि फ्रेश एयर आती है। तो मेरा जो बेड है वो गीला था क्योंकि खिड़की आपकी वॉइस इंक्लूड हुई है सर। आई थिंक नेटवर्क इशू अगेन। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मिस्टर सोलंकी। आप अभी आवाज आ रही है? मैंने एक सिग्नल नेटवर्क चेंज किया था, पुराने नेटवर्क। यस, अभी आवाज, हाँ अभी है। यस प्लीज। तो मैं कह रहा था कि काफी परेशानी तो आती है और बदलाव जो होता है। जैसे मैं बता रहा था कि कल जब मैं सोया तो बस की खिड़की खुली करके सोया था क्योंकि फ्रेश एयर के लिए। जब सुबह उठा तो मेरा जो बेड है साइड का गीला था, खिड़की खुली थी तो पानी अंदर आ गया। और बहुत जब गर्मी होती है तो मेटल है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, ठंडी होती है तो उल्टा होता है, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम हमने कोशिश की है कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बस में इंसुलेशन लगाने का प्रयास किया है। मैं आप यहाँ देख सकते हैं कूलर भी रखा है बस में, तो जी उससे जी। काम हो जाता है। डबल लेयर ट्रिपल लेयर, जब ठंड होती है तो कपड़े पहन के काम हो जाता है। तो ये सारी परेशानी आती, पर ये मतलब मुझे उतनी परेशान नहीं करती। मतलब इसको परेशानी नहीं बोल सकते, ये बदलाव है जो गो थ्रू, बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो और उसमें मन लगा हो तो मेरे ख्याल से बाकी सब चीजें बहुत छोटी है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ बिग डील। तो आज यात्रा को चालू है करीब 844 845 दिन हो गए, हाँ करीब 2.5 साल हो गए हैं। तो आई हैव नॉट बीन बॉदर्ड अबाउट ये कि ये नहीं है वैसा नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। कहीं घर में रह रहे होते तो वहां भी ये प्रॉब्लम हो सकती थी, ट्रेवल में तो होती है, ये मान के चलेंगे। तो वी एडजस्ट टू दिस, वी अडॉप्ट टू दिस। So life is not absence of problems. Only nature of problems get changed. And the wisdom is that you allow yourself to, cope up or accommodate with the changes. That is what wisdom is. The Please. problem, yeah, the problem is, I mean, the key thing is, what do you call as a problem? You know, what do you call as a problem? If I am able to eat 2 times, beautiful meals, then I can actually, work hard and suffer. I mean, bear other problem. तो छोटी छोटी चीजें जो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं उसको प्रॉब्लम समझते हैं, उल्टा करना चाहिए। दिस इज जो नहीं है वो लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाते हैं, दैट टीचर्स अस मेनी थिंग्स। कुछ होता है तो हमें सीखने को मिलता है।
So when we start taking things from a positive aspect of it, then these are not problems, these are learning lessons. ग्रेट। सोलर के साथ साथ हम लोग लाइफ कैसे जीना चाहिए वो एक्सपीरियंसेस भी आपसे ले रहे हैं। अगले महीने एक बड़ा प्रोग्राम है 22 अप्रैल को, वर्ल्ड अर्थ डे है। इसके अलावा भी और कमिंग टाइम में आपकी क्या एंडेवर्स हैं, इफ यू कैन शेयर। हमने एक्चुअली, जैसे मैंने कहा, एक जन आंदोलन बनाने की जरूरत है और बिना जन आंदोलन के इतना बड़ा समस्या को हल नहीं कर सकते। तो हमने 10 एक्टिविटीज बनाई है। वी कॉल देम अवेयरनेस एक्टिविटी एंड एक्शन एक्टिविटी। 5 एक्टिविटी जो अवेयरनेस की एक्टिविटी है, और उसमें सबसे बड़ी अवेयरनेस की एक्टिविटी है एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग। आपने, आई डोंट नो, आपने मेरी शर्ट को देखा होगा कि नहीं, आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। मेरी शर्ट पे लिखा है आई एम एनर्जी लिटरेट, आर यू। तो हम एनर्जी में निरक्षर हैं। वी डू नॉट नो वेयर एनर्जी इज कमिंग, वेयर इट इज गोइंग, हाउ मच आई एम यूजिंग, मेरे कारण कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, उसके कारण कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मैं कैसे ठीक करूं, मैं कैसे कम करूं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। ये एनर्जी लिटरेसी, मुझे लगता है कि एनर्जी का लाइसेंस होना चाहिए। आप गाड़ी बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते, नहीं तो आप दूसरों को नुकसान करोगे। वैसे ही बिना एनर्जी लिटरेसी के आपको एनर्जी का यूज करने का परमिशन नहीं होना चाहिए। ये लाइसेंस है। और ये 3 घंटे का फ्री प्रोग्राम हमने बनाया, ऑनलाइन है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। es-pal.org पे everybody can do this. It's a very very powerful program. I'm just typing the web address. Please. यहाँ पे चैट बॉक्स में डाला, es-pal.org पे ये कर सकते हैं। मेरी यात्रा एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है। ऐसे कई सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हैं। हमने एक CCD चैलेंज चालू किया, CCD क्लाइमेट करेक्शन डे। तो हम क्लाइमेट चेंज तो रोज करते हैं, पर करेक्शन सिर्फ पर्यावरण दिवस के दिन याद आता है। तो कैसे हम आदत में लेके आए कि हम रोज क्लाइमेट के बारे में सोचें, क्योंकि खराब रोज करते हैं। तो क्लाइमेट CCD चैलेंज में क्या करते हैं, एक चैलेंज देते हैं लोगों को कि आप कुछ करो, एनर्जी और मटेरियल सेव करने के लिए कुछ करो। तो वो चैलेंज को लोग ले, वो हमारा एक सबसे रिक्वेस्ट होता है। एक्शन में हम करते हैं, आप बिजली का बिल कम करो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सोलर लगाना तो अलग बात है, पर एनर्जी की जरूरत ही ना पड़े, आप वेस्ट ना करो, मिस यूज ना करो, ओवर यूज ना करो, इनएफिशिएंट यूज ना करो। उसके लिए आप एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही कम कर लो। टेक इट एज अ चैलेंज। 10% रिडक्शन करो, 20% करो। एक कमरा सोलर का, सोलर में जाना है तो पूरा घर नहीं जाना है, ट्रायल करना है, महंगा है, सस्ता है। तो एक काम करो, एक कमरा सोलर का कर लो, एक कमरा, और खुद से कर लो। एक कमरा करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, अपने जरूरत पूरी होती है तो दूसरा करो, तीसरा करो, पूरा घर का कर लो, बिजली कनेक्शन छोड़ दो। सो डू दैट। अच्छा, मैंने ये लिंक जो ऊपर डाला है es-pal.org, यही एनर्जी लिटरेसी का लिंक है। somebody is asking, तो मैंने इसलिए रिप्लाई किया। तो वो कर लो। फिर हमने क्लाइमेट क्लॉक, जो आप बता रहे थे, 22 अप्रैल को अर्थ डे है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वी हैव डिजाइन्ड अ क्लाइमेट क्लॉक। क्लाइमेट क्लॉक जो मैंने बताया कितना कम समय बाकी है, तो हम सब अपना क्लाइमेट क्लॉक बना सकते हैं, अपने अपने बिल्डिंगों पे लगा सकते हैं, ताकि लोग उसको देखें। मतलब हर बार जब क्लाइमेट क्लॉक टिक होता है, तो जब टिक होता है तो लोगों को लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो क्लाइमेट क्लॉक बना के सब लोग वो कर सकते हैं, अपना इंस्टॉल कर सकते हैं अपने अपने। ये सेम पोर्टल जो es-pal.org, वहां पर जाके आप उसको, उसमें रजिस्टर कर सकते हैं क्लाइमेट क्लॉक के लिए भी। आप एक अपना सोलर लैम्प प्रोजेक्ट है, आप सोलर लैम्प बनाना सीख सकते हो। तो हमारे अवेयरनेस के एक्टिविटीज हैं और एक्शन के एक्टिविटीज हैं। सो एक्शन एंड अवेयरनेस, बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ our yatra, our promotion, our portal, and a lot of activities. जी, इस पूरे संवाद में एक जरूरी चीज रह गई है, वो है इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ। आपने 11 वर्ष का जो ये वनवास समाज से जुड़ने के लिए बड़े मिशन को अडॉप्ट करते हुए लिया है, और ऐसे में आपको मन में भी अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, भावनात्मक लगाव है, उसकी कहीं ना कहीं कमी लगती होगी। और स्पेशली घर पर जो बच्चे हैं और आपके माता पिता हैं और परिवार के अन्य जो स्नेही गण हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये कमी, ये वैक्यूम निश्चित तौर पर लगता होगा। सबसे पहले तो मैं मैम को और पूरी फैमिली को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूँगा कि आपने सर को इतना संबल दिया है, प्रोफेसर सोलंकी साहब को एक बड़े मिशन के लिए आपने अलाउ किया है कि
हम अपने आप को संभाल लेंगे, आप पूरे समाज को, देश को, पूरे विश्व को जो आपके पास देने के लिए है वो आप निर्बाध रूप से दें. सो एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल ऑफ देम. नाउ कमिंग बैक टू यू, बिकॉज क्योंकि क्या है कि आपके पास बहुत कुछ है, सिर्फ एनर्जी तक की मामला सीमित नहीं है. इंटरनल स्ट्रेंथ जो है ना, या मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें, इमोशनल स्ट्रेंथ की बात करें, वो कैसे आप कोप अप करते हैं, मैनेज करते हैं? वेल, आई मीन, ऑफ कोर्स, अब मेरी बस में लिखा है कि शरीर और मन का पोषण दोनों जरूरी है. मन का पोषण, आई थिंक मोस्ट पीपल डू नॉट इवन अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन, शरीर का पोषण एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, फ्रेश खाना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, दैट्स राइट. बट लाइफ इज नॉट ओनली द बॉडी, लाइफ इज ऑल्सो द माइंड, राइट. मन भी है. सो मन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? एंड जैसे शरीर के लिए न्यूट्रिशन होता है, वैसे मन का भी न्यूट्रिशन होता है. वो है प्राणायाम होता है, ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है, अध्यात्म होता है. सो अनफॉर्चुनेट है कि यंग जनरेशन इज bereft of all this. उनको नहीं मिला है किसी कारण से. So I am thankfully got introduced to spirituality. I am a art of living teacher also. तो उससे हमारा एक मेंटल स्ट्रेस आती है. और गुरुदेव पूज्य श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि आपको कोई भी काम में सफलता चाहिए तो 3 चीजें होना चाहिए. नंबर 1 इज प्योरिटी ऑफ हार्ट. हार्ट हैज टू बी प्योर कि हाँ मुझे करना है. नंबर 2, क्लैरिटी इन माइंड. Your mind has to be clear. This is exactly what I want to do. And number 3, sincerity of action. Your action has to be really sincere. So when you have pure heart and clear mind and sincere action, then you can enter. तो meditation के साथ में future wish, clarity, मेंटल स्ट्रेंथ मिलता है कि हम वो काम कर सकते हैं. जी. Now coming to again back to your energy स्वराज यात्रा, इसके अभी आपको इम्पैक्ट इसके महसूस होने लगे होंगे. किस तरह के इम्पैक्ट आपको लग रहा है, चेंजेस आने लगे हैं? वेल, आई मीन, यात्रा को 11 साल की, अभी 2.5 साल हुए हैं. तो इट्स इन अ वे इट्स अ वेरी वेरी बिगिनिंग फेज ऑफ इट, नॉट सो बिगिनिंग. But one thing is that people are now recognizing that there is something like this, So this itself is, I think, one thing that people understand. Many times मैं किसी शहर से गुजरता हूँ, people call me कि अच्छा आपकी बस दिखी, आप इस शहर में हो क्या? So that awareness is there. And many times when I give lecture, after my lecture, a lot of changes happens. People change, their energy consumption habits change, their energy consumption change. कई लोग मुझे देख के लाइट पंखा बंद कर देते हैं. मुझे देखने के बाद कई लोग एसी बंद कर देते हैं. हमारे एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग इज अ वेरी पावरफुल ट्रेनिंग. मेनी चेंजेस पीपल हैव शेयर्ड विथ मी कि कैसे जब लोगों ने एनर्जी लिटरेसी किया, so what changes they have felt in their life. And by the way, I did not realize that energy literacy has to be a course until I was a professor at IIT Bombay. जब मैंने यात्रा चालू की तभी मुझे भी समझ में आया कि नहीं, before we talk about solar energy, there has to be energy literacy. Everybody has to understand energy. So these ideas have come after the yatra. So मेरे खुद का भी learning काफी हो रहा है, but I can see कि impact भी है. And that is one reason, 845 days gone. I don't feel tired or exhausted. In fact, I feel more energetic because there is an impact that is visible in the society. Of course, society is so big that it's going to take time, but there is a very positive impact that I can see. वो एनर्जी तो मैंने भी फील की थी. मुझे याद है 4 वर्ष पूर्व मैंने कहीं आपका जयपुर MNIT में एक सेशन हुआ था, फिर नेक्स्ट डे अलवर में एक सेशन था, और मेरा दिल्ली दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम था. सो आई रिक्वेस्टेड यू टू, इफ यू कैन कम डाउन टू दिल्ली. सो सूरज के तो ऑर्बिट में चारों तरफ लोग एनर्जी ले ही रहे हैं, और निश्चित तौर पर आज के प्रोग्राम में हमने जिस तरह के प्रश्नों को उठाया है और आपके बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स को भी छूने की कोशिश की है, उसमें निश्चित तौर पर सबके लिए कुछ ना कुछ है, और आने वाले टाइम में भी उसका इम्पैक्ट बढ़ेगा ही. दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं. प्रोफेसर सोलंकी, ऐसा कोई एस्पेक्ट है जो आप शेयर करना चाहें जो इन प्रश्नों में रह गया है? या मेरे दिमाग में अभी भी एक प्रश्न है कि
तमाम लोग आमतौर पर यही होता है कि पढ़ाई की, नौकरी मिली, आईआईटी जैसे एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में आप हैं, आपके मन में जो भी है वो करने की प्रेरणा मिलती है, आप कर सकते हैं, रिसोर्सेज हैं, और जीवन में क्या चाहिए, है ना। तो फिर अचानक से ये धुन कैसे जमी कि मुझे नहीं, आई नीड टू मेक समथिंग बिग एंड लेट मी लीड फॉर अ चेंज। वेल आई मीन आई कई सारे लोग प्रश्न करते हैं, मैं सिंपल सा जवाब देता हूँ कि व्हेन देयर इज अ लायन बिहाइंड यू, you don't need any motivation to run, right? You are anyway going to run. तो जब क्लाइमेट चेंज इतनी गंभीर समस्या है, if you really understand it that it is a serious, if you are ignorant, then that's it, nothing will happen to you. But if you really understand that it is such a huge problem, you will automatically take an action. You need to just understand what it is. And second thing is, by 2019, I've written many books, I've done a lot of research, I've got many awards, national level award, international awards. So I wanted to contribute in the climate change mitigation, which is impactful, not as a feel good fact. सिर्फ मन को अच्छा लगे, अवार्ड मिल जाए, बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, that is not what I wanted. I wanted to create a world or create an impact which is visible in my lifetime. And because climate change is a global problem, विश्व की समस्या है, तो ये छोटे मोटे प्रयास से नहीं हो सकता था। ये क्लियर हो गया। I was very clear कि IIT में बैठ के इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसके लिए जनता, हर व्यक्ति जिम्मेदार है, हर व्यक्ति तक जाना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह की यात्रा का विचार आया, और इसलिए मैं ये कर पा रहा हूँ, या अभी भी उतना ही एंथुसियाज्म और एनर्जी है यात्रा को आगे बढ़ाने का। इनफैक्ट उल्टा होता है, मैं अपनी टीम को बोलता हूँ जल्दी करो, सिर्फ 8.5 साल ही बचे हैं, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम टू ब्रिंग द चेंज, सो लेट अस हरी अप। ग्रेट। ममता नेक्सन ने लिखा है, आई एम लीडर ट्रेनर एट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, आई वांट वन वेबिनार एट नेशनल लेवल in association with Bharat Scouts and Guides national headquarters with our unit leaders and youth and Chetan Solanki sir guidance. So एक रोशनी लेने वाले लोग भी मौजूद हैं आपसे। जरूर। मैं एक्चुअली जो क्लाइमेट लॉ का इवेंट है वो तो देश भर में होने वाला है, पर 22 अप्रैल को खास करके एक सेंट्रलाइज जगह दिल्ली में होने वाला है, और मेरी यात्रा यहाँ से दिल्ली जाएगी, एंड आई एम गोइंग टू स्टेशन माई सेल्फ फॉर 3 weeks एटलीस्ट फॉर वो प्रोग्राम की तैयारी के लिए। एंड ड्यूरिंग दोज 3 weeks आई एम गोइंग टू टेक मेनी सेशंस इन दिल्ली। तो यदि स्काउट्स एंड गाइड्स का ऑफिस दिल्ली में है, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक वन सेशन, और इफ नॉट, even an online session can be organized. Right. So coming to your international assignment, क्या भारतवर्ष के बाद में अभी इस यात्रा के दौरान विदेश भ्रमण का भी कुछ इरादा है? डेफिनेटली, मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये तो सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं, ये तो मनुष्य की प्रॉब्लम है, हर ह्यूमन की प्रॉब्लम है। तो चाहे वो अमेरिका और अफ्रीका हो, सबकी प्रॉब्लम है, और सिर्फ एक देश को सॉल्व करने से समस्या हल नहीं हो जाएगी, बिकॉज कार्बन एमिशन कोई भी करे, जब कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाता है तो सब पे प्रभाव डालने वाला। तो मैंने किया, पड़ोसी ने किया, पड़ोसी देश ने किया। सो ये फर्स्ट टाइम ह्यूमन लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आई है मनुष्य के इतिहास में, जब एक ऐसी समस्या है जो किसी एक व्यक्ति की है, एक प्रदेश की है, एक देश की नहीं, बल्कि विश्व की समस्या है। इसलिए पूरे वर्ल्ड को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो डेफिनेटली भारत में जो अभी मेरे प्रयोग चल रहे हैं, वो प्रयोग को मैं, जैसे एनर्जी लिटरेसी एक प्रयोग है, कितना इम्पैक्ट आता है, ये प्रयोग एक बार सक्सेसफुल होते हैं या वेल स्टेब्लिश होते हैं, तो डेफिनेटली यात्रा बाहर के देशों में भी जाना ही चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को एक साथ जुड़ना पड़ेगा। जी, one more question from the attendee. Daily steps that everyone follow to overcome this climate change. हालांकि हमने शुरुआत में इसका जवाब दिया है, फिर भी लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ, एक सिंपल तरीका है जो सबको याद रखना चाहिए, मेरा नियम है AMG, जो डेली लाइफ में कर सकते हैं। AMG, अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट। आपको जो भी करना हो डेली लाइफ में, A मतलब अवॉइड करो, क्या पॉसिबल है अवॉइड करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने कपड़ों को प्रेस करना अवॉइड कर दिया, मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रेस करने में एनर्जी आती है, उससे कार्बन एमिशन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। मैं कैन आई अवॉइड? देख लो, अवॉइड कर सकते हो क्या। मैंने अपने घर में फ्रिज नहीं है, गीजर नहीं है, AC नहीं है, वी हैव अवॉइडेड इट। ऐसा नहीं कि मैं गरीब आदमी, आई एम ए प्रोफेसर ऑफ IT, बट व्हाई शुड यू अवॉइड? बिकॉज इफ यू यूज रेफ्रिजरेटर फॉर 1 day, एक दिन आपने यूज किया तो 1 यूनिट बिजली कंजम्पशन होता है, उसके कारण 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली होता है।
वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाएगा तो 300 साल तक असर है। तो हमारा जो कंफर्ट है एक दिन का रेफ्रिजरेटर को यूज करने का, उसका जो डिस्कम्फर्ट है वो 300 साल का है। तो कैन वी अवॉइड इट? यस, भारत देश में हम तो बिना इसके रहते थे। देर आर ब्यूटीफुल टेक्निक्स। आप कैसे सब्जी भाजी को कपड़े पे लपेट करके थोड़ा नमी बना के रखोगे तो होगा। फ्रेश खाना खाना वैसे भी अच्छा है। हम लोग आजकल मॉडर्न होते साथ क्या करते हैं, एक हफ्ते की सब्जी भाजी लेके फ्रिज में ठूस देते हैं और बासी करके बढ़िया खाते हैं। अवॉइड कर सकते हैं। एक बार गर्म पानी से नहाए तो 1 यूनिट बिजली लगती है, 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 300 साल का भुगतान। तो क्या हम अधिकतर समय साल के ठंडे पानी से नहा सकते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? और यदि बहुत ठंडी है तो एलपीजी पे गर्म करके नहाओ, वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। आपका लिमिटेड रहेगा, नहीं तो बाथरूम में गीजर लगा लिया, बटन चालू किया, पता भी नहीं कितना एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो ये अवॉइड कर सकते हैं। एसी को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है। क्या हम कूलर से काम चला सकते हैं, फैन से काम चला सकते हैं? क्या प्लांटेशन लगा के अपने घर को आसपास ठंडा कर सकते हैं? क्या दीवालों को व्हाइट पोत करके अपने छत पे गमले से उसका हीट का जो इम्पैक्ट होता है उसको कम कर सकते हैं? देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन डू। सो अवॉइड 1/3 यूज ऑफ मटेरियल दैट वी यूज इंक्लूडिंग एनर्जी। अवॉइड करो इफ पॉसिबल। अवॉइड इज बेस्ट थिंग। इफ यू कैन नॉट अवॉइड, मिनिमाइज इट। Can we use appliances which use a very less energy like LED light? LED light बहुत कम एनर्जी में लगता है। बहुत कम एनर्जी मींस यू आर सेविंग, यू आर यूजिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी, मींस यू आर एमिटिंग लेस कार्बन डाइऑक्साइड। कपड़े अपने अलमारी भर भर के मत रखो, डोंट फिल योर कबर्ड्स फुल ऑफ क्लॉथ। इतने कपड़े आजकल लोग खरीदते हैं कि बेचारे कई सारी जोड़ी होते हैं, साल भर अपने मालिक का रास्ता देखते रहते हैं कि मेरा मालिक कब पहनेगा। फॉर द गॉड सेक डोंट डू इट, बिकॉज कपड़े को बनाने में बहुत एनर्जी लगती है। डोंट डू इट। घर छोटा बनाओ, बेडरूम छोटा बनाओ, क्योंकि बड़ा बेडरूम बनाओगे तो जो एसी रहेगा वो एसी क्या करेगा, दीवालों को ठंडा करेगा, छत को ठंडा करेगा, फ्लोर को ठंडा करेगा, फर्नीचर को ठंडा करेगा, आखिरी में जाके तुम्हारा छोटा सा बॉडी 2 फीट बाय 2.5 फीट को ठंडा करेगा। व्हाट अ बदतमीज यूज ऑफ एसी। इतना बड़ा बेडरूम नहीं, डोंट डू दैट। मेक स्मॉलर स्पेस, कूल स्मॉलर स्पेस, मिनिमाइज करो। फ्रिज को उपयोग मिनिमाइज करो। फ्रिज का उपयोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? डोंट बाय 2 doors and 3 doors and 4 doors रेफ्रिजरेटर। आजकल पुण्य जी लोग 3-3 4-4 दरवाजे का फ्रिज करते हैं, फ्रिज में ही कमरा बनाने पे तुले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर क्या करते हैं, लोग कम है घर में फिर भी। और इतना बड़ा फ्रिज ले लिया तो क्या करना है, उसमें अचार रख के खाना है। मुझे लगता है दुनिया में फ्रिज में अचार रख के खाने से बड़ा पाप नहीं हो सकता। तो मेक स्मॉलर फ्रिज, छोटा लो, 60 लीटर का लो, 5 स्टार रेटेड लो। आपकी एनर्जी की नीड्स बहुत कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। सो अवॉइड करो। अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करो। मिनिमाइज नहीं कर सकते तो आखिरी है जी, जनरेट करो। कहाँ? अपने छत पे करो। बिजली कनेक्शन छोड़ दो, आत्मनिर्भर हो जाओ। दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, एज आई सेड, एनर्जी स्वराज, एनर्जी आत्मनिर्भर। तो जनरेट करो। कितना? 1/3 अवॉइड करो, 1/3 मिनिमाइज करो, जनरेट ओनली 1/3। फॉलो दिस AMG रूल। एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो AMG रूल, यदि AMG नियम का पालन नहीं किया तो क्या होगा? यू विल हैव टू से OMG, ओ माय गॉड, सोलर एनर्जी इज एक्सपेंसिव। ओ माय गॉड, छत पे जगह नहीं। ओ माय गॉड, पॉलिसी नहीं है, सब्सिडी नहीं, फलाना नहीं, ढिमका नहीं। सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। Follow AMG in all aspect of your life, then you will be sustainable. So I hope we have tried to cover all the aspects of today's topic, be it day-to-day life, to policymakers, to youth and their skill enhancements, employability, and ultimately making Atmanirbhar Bharat through Energy Swaraj. So thank you, Professor Solanki, for being with us और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए. It's not merely confined to energy aspect, with the aspect of life, and I'm sure ultimately it is leading to joy and happiness. And I'm sure in the coming times we'll be having more such interacting sessions. और 1 घंटा आपके साथ कब मालूम नहीं चला. अच्छे संवाद की निशानी यही है कि समय का भास न रहे उसमें. And thank you once again. And Thank you very much. जिन्होंने भी एक सवाल पूछा था कि कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारी टीम आपको सर का ईमेल आईडी, इफ यू प्लीज अलाउ अस टू शेयर. Sure, you can definitely share with me. प्लीज आपके साथ ईमेल आईडी शेयर करेंगे. तो आप सर जब दिल्ली में हैं तो यू कैन प्लान प्रोग्राम विद हिम. Thanks you once again, sir. Thank you so much. Thanks to everyone for joining, and I hope people will not just listen and clap. People will start taking action. Without action, you will not be able to correct the climate change. So we need action for climate correction.
let's all start taking small step, but important step in our life. Encourage others to also do the same. Become energy literate, spread energy literacy. Thank you very much. Thank you. Namaskar. Namaskar.